गाड़ियों पर लगेगा ग्रीन टैग। इसके अलावा एक और अपडेट है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के बारे में, जिसको मंजूरी मिल गई है। हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube के चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, हम लोग ने एक कार रिस्टोरेशन का प्रोजेक्ट लिया था साथ में करने के लिए। तो वो गाड़ी का एक्चुअली 4th पार्ट हम लोग ने अपलोड किया था YouTube पे और बहुत सारे लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला था। और जब ये 5th पार्ट डालने का टाइम आया तो भी हमें बहुत टाइम गया गाड़ी का ये रिस्टोरेशन करने के लिए, बिकॉज एक दिक्कत आई थी। जैसे हमारे नितिन गडकरी साहब है, उन्होंने एक GR निकाला था जो कि 15 साल पुरानी गाड़ियों का पासिंग नहीं होने वाला था। तो वही टेंशन में था कि मैंने इतनी गाड़ी बनाने के बाद वो गाड़ी ट्रांसफर होगी कि नहीं या पासिंग होगी कि नहीं, उसका टेंशन में था। लेकिन फाइनली मैंने जो बाद में एक न्यूज़ पढ़ा तो उसमें पता चला कि गाड़ी मेरी पासिंग होगी, ट्रांसफर भी होगी। उन्होंने अप्रैल का ये 2021 का टाइम दिया हुआ है 15 साल पुरानी गाड़ी पासिंग करने की। तो चलो गाइस, अभी हम लोग आपको बताता हूँ कि हम लोग ने अभी जो ये टाइम में हम लोग जो गाड़ी में काम किया है उसको मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाता हूँ। जैसे कि गाड़ी का फ्रेम होता है, जहाँ पे पीछे जो स्पीकर्स लगते हैं वहाँ पे हम लोग ने एक होल किया हुआ है। जैसे कि हम लोग बाद में जाके उस पे वूफर लगाएंगे अंदर से, तो उसका वूफर का जो बेस है वो हमें क्लियर सुनाई देने के लिए हमने उस फ्रेम को काटा है। तो वो आपको दिखाता हूँ, चलिए मैं कैसे कट किया है। करने के बाद फिर बाद में हम लोग ने गाड़ी में जो कि जितने भी डेंटिंग के काम किए थे या जितना भी गाड़ी रस्टिंग हुआ था, उस रस्टिंग और जो कि हम लोग ने डिक्की के पैनल, फिर जो हम लोग ने एक्स्ट्रा पैनल फिट किए थे या डिक्की का फिट की थी, उस जॉइंट पे हम लोग ने डामर कोटिंग किया हुआ है, जो कि इंडिया में पहली टाइम ऐसे गाड़ी में हुआ कि डामर कोटिंग किसने किया होगा। उस डामर कोटिंग का फायदा क्या होगा कि गाड़ी में आपके जो कि जैसे कि गाड़ी हमारी जो ये ऑलरेडी रस्टिंग थी और इसको बनाने के बाद फिर से ये रस्टिंग ना पकड़े, इसके लिए हम लोग ने इस पे डामर कोटिंग की है। तो चलो आपको पूरा मैंने दिखा देता हूँ कि हम लोग ने डामर कोटिंग कैसे किए, क्या किए। चलो उसके बाद हम लोग ने पूरा गाड़ी का जैसे कि पूरा पुराना कलर था वो हम लोग ने रिमूव किया पूरा सैंडिंग करके। और उसके बाद उस पे हम लोग ने लांबी जो थी वो पूरी लांबी लगा के उसको हम लोग ने लांबी सैंडिंग किया। और लांबी कंप्लीट होने के बाद फिर उस पे हम लोग ने जैसे कि पुट्टी आती है जो कि लांबी के ऊपर लगाने के बाद और उस सरफेस को पूरी स्मूथ कर देता है। तो वो भी हम लोग ने पुट्टी लगाया, वो भी आपको दिखा देता हूँ।
बाद पूरी गाड़ी सैंडिंग होने के बाद उसका सरफेस स्मूथ होने के बाद उसका जो हम लोग कलर चेंज करने वाले हैं, कोई भी गाड़ी, मैं मेरी गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी गाड़ी का कलर चेंज करते हो तो आपको उसको पहले एक ब्लैक कलर का अस्तर कोट लगाना पड़ता है। उससे आपका जो कलर चेंज आप करोगे वो कलर आपका उठ के दिखेगा, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ, चलिए। अस्तर कोट कंप्लीट होने के बाद ब्लैक जो हमने अस्तर कोट मारा है, उसके बाद हम लोग गाड़ी पे जो कलर हम लोग करने वाले हैं गाड़ी पे, उस कलर का हम लोग एक अस्तर कोट मारेंगे, जैसे कि बेस कोट बोलते हैं उसको। जैसे कि हम लोग ब्लैक कलर का पेंट कर रहे हैं तो उसको ब्लैक कलर का बेस कोट लगाएंगे, व्हाइट कलर का कलर कर रहे हैं तो उसको व्हाइट कलर का बेस कोट लगाएंगे। तो हम लोग ने फिलहाल अभी जो रेड कलर फाइनल किया है उसका हम लोग रेड कलर का बेस कोट लगाएंगे। चलो आपको दिखाते हैं। और जैसे कि उसका बेस कोट होने के बाद हम लोग ने जिस गाड़ी के बम्पर्स थे वो हम लोग ने फिट करवाए, और उसका जो हम लोग ने केरला से बॉडी किट मंगाया था, जो आपको मैंने पहले की वीडियो में दिखाया था, वो हम लोग बॉडी किट और बम्पर्स फिट करेंगे। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. गाइस अभी इतना सारा काम कंप्लीट होने के बाद जो फाइनली जो टाइम आया था, जिसके लिए हम लोग ने 5 से 6 महीने का इंतजार किया था कि कौन सा गाड़ी पे कलर होगा, और फाइनली मैंने जो रोसो कोर्सा जो कलर आता है, जो कि फरारी गाड़ी में यूज होता है, जो शेड आती है, वो कलर स्पेशली मैंने मेरे फ्रेंड से बना के मंगवाया। उसके लिए भी मुझे 8 से 9 दिन का इंतजार करना पड़ा, तब वो कलर मुझे मिला।
चलो गाइस, मैं आपको पूरी कलर की प्रोसेस दिखा देता हूँ, हम लोग ने कैसे पेंट किया है, कैसे लिकर कोट किया हुआ है। I said I'm moving too far. Get to glass. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon. Rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting shots. गाइस फाइनली जो 2 कोट कलर के होने के बाद उस पे हम लोगों ने लिकर कोट अप्लाई किया। वो मैं लिकर कोट अप्लाई करने के बाद टाइम पे शूट नहीं कर पाया बिकॉज मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है उस स्मेल का, और तो दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्ट आपको वो दिखा देता हूँ। लिकर कोट मारने के बाद गाड़ी का जो फाइनली जो फिनिशिंग आया, कैसे उसका रिजल्ट आया, वो आपको दिखा देता हूँ। चलिए। Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to glass. अभी जो पूरा कलर का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ इसका जो फाइनली कलर सूखने के बाद उसका पॉलिशिंग होगा और सिरामिक कोटिंग करने वाले हैं हम लोग। वो आपको अगले ब्लॉग में हम लोग दिखाएंगे, जो हम लोग का अगला ब्लॉग आएगा। और अभी जो इंटीरियर का काम था, वो इंटीरियर का काम का भी आपसे मैंने बात की थी। गाड़ी का उसका रेड एंड ब्लैक में इंटीरियर होगा, उसके डोर पैड से उसको हम लोग रैप करेंगे, वो आपको दिखा देता हूँ।
पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद उसके कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग ने डैशबोर्ड्स और जो फाइबर पार्ट्स थे उस पे लेदर लगाना इम्पॉसिबल था, तो डेट्स हम लोग ने उसके ही मैचिंग का हम लोग ने कलर उस पे पेंट किया है। तो चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to glass. जो कलर कंप्लीट होने के बाद एक्चुअली वो कलर खुद मैंने ही किया हुआ है, आपने वीडियो में देखा रहेगा। तो गाइस और उसके बाद फाइनल आए हम लोग वुडन पे। वुडन फिनिशिंग जो हम लोग ने गाड़ी पे की है, जो मतलब जो पैनल्स थे, जैसे कि डैशबोर्ड का जो टेप का पैनल होता है, फिर एसी के विंड्स के पैनल होते हैं, देन पावर विंडो के पैनल होते हैं, जो पावर विंडो के बटन आते हैं, उसको हम लोग ने हाइड्रो डिपिंग वाटर पेंट में डिप किया है, जो कि कार्बन फाइबर में होगा। तो पूरी प्रोसेस में आपको उसकी दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या किया है, क्या किया है। तो चलिए वो भी देखते हैं। Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to glass. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't. Shining like it's neon. Rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting shots. Shooting stars. Didn't even get to cross.
said I'm moving too far. Get to glass. फाइनली ये मेरा पूरा काम कंप्लीट हुआ है और ये जो सीट्स कवर थे वो मेरा दर्शन एक फ्रेंड है जो कि सीट्स कवर का स्पेशलिस्ट है। मतलब उसके पास ऐसी सीट्स कवर की फिटिंग होती है कि पूरे इंडिया में आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो उसने मुझे ये सीट्स कवर, मेरे सीट्स जो पुराने थे उस पे सीट्स कवर स्पॉन्सर की थी। चलो उसका मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, सीट्स कंप्लीट होने के बाद सीट्स कैसी दिखती है। गाइस ये देखो फिटिंग, देखो आप इसकी, इसे स्टिचेस देखो भाई के जो फिटिंग की है ना वो एक नंबर फिटिंग है। अब पूरी सीट देख लो फिटिंग में, ऐसे कोई कमी नहीं छोड़ी हम लोग ने गाड़ी में। देखिए इतने पुराने सीट थे फटे फुटे, उसको पूरा नया बना दिया। फ्रेंड्स जो काम हम लोग ने कमिटमेंट किया था वो हम लोग ने पूरा किया हुआ है। जैसे कि इंटीरियर का हो गया, कलर्स का हो गया, ये सारी प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगा हमें, क्योंकि हर एक गाड़ी का एक स्क्रू से लेके हम लोग ने हर एक चीज में हम लोग ने चेंजेस किए। ऐसा नहीं कि जो गाड़ी का पहले का चीज था वो फिट किया हुआ है। अब इसके मैटविल्स हैं वो भी हम लोग चेंज करने वाले हैं, तो उसका और गाड़ी का डिटेलिंग करेंगे, यानी पॉलिश का और सिरामिक कोटिंग का। इसका ब्लॉग आगे आएगा, वो आपको हम लोग अगले वीडियो में दिखाएंगे। और गाइज जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी है विनय रैप वर्ल्ड, उसमें आप जाके उसको फॉलो भी कर सकते हो। उस पर हम लोग बहुत सारे अपडेट करते रहते हैं गाड़ियों के बारे में, या कोई गाड़ी का एसेसरीज के पार्ट्स आते हैं हमारे पास इंपोर्ट किए हुए जो बाहर मार्केट में नहीं मिलते, जो हमारे पास अवेलेबल होते, तो आप मुझे उसके लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और मेरा फेसबुक पे भी आईडी सेम ही है विनय रैप वर्ल्ड, और यूट्यूब का तो आपको पता है। तो गाइज और एक बात है कि मैं कार मॉडिफिकेशन में मैं खुद ट्रेनिंग भी देता हूँ मेरे वर्कशॉप में। जैसे कि आपको कार रैपिंग सीखना है या कोई इंटीरियर डिजाइनिंग का आपको कोर्स करना है, ऐसी बहुत सारी चीज है। जैसे कि हाइड्रोग्राफी हो गए, फिर डिटेलिंग हो गया, सिरामिक कोटिंग हो गया, उसके हम लोग पूरी ट्रेनिंग देते हैं। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही आप मुझे मैसेज कर सकते हो। गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। No, there